Hi friends, good afternoon to all of you. Myself is Raj Shankar at Siramas IS platform. Today I welcome all of you for a brief but very important sociological discussion and participation. आज हमारा डिस्कशन होगा सोशियोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है एलियनेशन एंड द थीम ऑफ माय टॉपिक इज दैट व्हाई कैपिटलिज्म क्रिएट्स एलियनेशन इन एवरीडे लाइफ। पूंजीवादी समाज क्यों लोगों में अपने काम काज से अलगाव पैदा करता है, पूंजीवादी समाज क्यों लोगों में काम काज से नफरत पैदा करता है, क्यों वाई एलियनेशन इज़ वेरी हाई, वाई डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क इज़ वेरी हाई इन कैपिटलिज्म। आखिर लोग मेहनत करना चाहते पूंजीवादी समाज में, फिर भी लोग काम करते हैं, अपने काम से नफरत क्यों करते हैं, अपने काम से इतना थका हुआ, इतना उबाऊ क्यों महसूस करते हैं, काम वर्क स्थल पर जाने से लोग बहुत डरते क्यों हैं, क्यों लोगों को लगता है उनका काम सबसे बेकार है, दुनिया का काम सबसे अच्छा है। इतनी सारी उबाऊ, इतनी सारी थकान, इतनी सारी टायर्डनेस, मोनोटोनी, वाई द कैपिटलिज्म डेवलप्स। Is there any problem in the capitalism? Is the problem inherent in the nature of the humans itself, or this is the problems involved in the structure of the capitalism itself? एक बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं लोग कामचोर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना 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 ना, like is the problem is not in the individuals, problem in the system, problem in the society itself, the nature of the work itself. तो बहुत सारे कन्फ्यूजन से डिलेमा होते हैं रिगार्डिंग दिस मैटर। आज उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे एंड दिस कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट दिस आइडिया इन द लाइट ऑफ कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ एलियनेशन। तो वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ एलियनेशन। सो द आइडिया इज द कंसेप्ट इज हाउ कैपिटलिज्म creates alienation every day, right? The how capitalism creates alienation every day. I'm not talking about the why capitalism creating, the how capitalism creates alienation every day, right? So first in context the idea of Marx, regarding in the context of Marx we are going to discuss, or according to Marx how capitalism creates alienation in everyday life. But my short version is how capitalism creates alienation every day. This is going to study in the light of Marx idea of alienation. First let us understand briefly what is alienation. Do you know about the meaning of alienation? What is alienation? Have you heard the term meaning alienation? Have you heard the meaning of the term alienation? The meaning of the term alienation. What is alienation? Alienation means a very simple meaning, layman understanding. Alienation means simply a kind of, in one sense we can say, detachment. In one sense, this meaning is considered the detachment or separation from. Detachment or separation from, right? So one meaning of the alienation is a detachment from something, separation from something. किसी चीज़ से अलगाव महसूस करना, दूरी महसूस करना, डिटैच फील करना, कनेक्टेड फील ना करना, नॉट फीलिंग इंटीग्रेटेड, नॉट फीलिंग कनेक्टेड, बट फीलिंग डिटैच्ड, वन मीनिंग। इसे कहते हैं कट ऑफ फ्रॉम। कट ऑफ फ्रॉम, किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी चीज़ से अलग महसूस करना, और वी कैन से ये काइंड ऑफ सेल्फ estrangement. Self estrangement is a condition where not only a person feel distanced from something, detached from something, but also have a sense of hostility. ना सिर्फ किसी चीज़ से दूरी महसूस करना, अलग महसूस करना, उससे डिस्टेंस महसूस करना, बल्कि उसके प्रति एक हॉस्टाइल माइंडसेट, एक गुस्से वाली फीलिंग्स अंदर से आते रहना। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट, राइट? और ये एलियनेशन इज एग्जैक्टली द टर्म refers to self estrangement as per the Karl Marx. So this is the brief idea of the alienation. See, Karl Marx simply begins from the fact when we talk about the according to Marx, when we talk about its main contribution of Karl Marx, according to Marx, Marx say the work is
work is very creative and satisfying activities. Karl Marx's basic idea is this one. The work is very creative and satisfying activity. Work is essential part of our life. Without work, human life is useless. So we have to involve in work. Work not only is considered as a means of livelihood. Work not only considered as a means of earning money. Work is considered not only a means where a person is engaged in, but work is also important on the part of our life. हमारी काम हमें खुशियाँ देता है, हमारी काम हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, हमारा वर्क हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, हमारा वर्क हमें सेटिस्फैक्शन देता है, हमें अंदर से संतुष्टि देती है। जब हम अच्छा काम करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, लगता है वाह ग्रेट, टुडे आई हैव डन ए वेरी गुड जॉब, मज़ा आ गया। दिस इज द वे द वर्क गिव्स inner peace, inner satisfaction on the part of humans. But Marx says, in capitalism क्या हो रहा है? But Marx says, actually, as per Marx, in capitalism, what is happening? In capitalism, work is what? In capitalism, work is monotonous. Work is monotonous. काम में मजा ही नहीं, एक ही काम बार बार किए जाओ. Work is monotonous and work is a very monotonous. Work is sometimes meaningless. And work is a very work creates also a kind of boredom. So work is monotonous, meaningless, boredom, and work is simply a kind of work becomes simply a means of production. Your work is means of production. So a labor power is not a creative person. A labor power is simply treated as a means of production. So out of this idea, out of this situation, a worker feels dissatisfied in the capitalism. Number one, apart from that, like a worker has no control over its own product. कैपिटलिज्म में एक मजदूर बड़ी मेहनत से, सारी तपस्या से, सारी मेहनत से, सारी कोशिश से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है और उस प्रोडक्ट्स पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है. उसका मालिक कोई और है, बनाता वो है, मालिक कोई और है. चपाती बनाता वो है, खा कोई और जाता है. तो मालिक बनाता वो है, मालिक कोई और है, और मालिक के लिए सिर्फ वही कमोडिटी है जो बाजार में बेचा जाएगा. इसके लिए उसकी इमोशन है, सेंटिमेंट है. ही एक्सप्रेसेस हिज ओन क्रिएटिविटी, सेंटिमेंट, इमोशन, लाइफ इन हिज प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट में वो अपनी सब कुछ देखता है, अपनी क्रिएटिविटी देखता है, अपनी सृजन की क्षमता देखता है, परंतु मालिक उसे सिर्फ वस्तु देखता है, कमोडिटी देखता है और बाजार में बेच देता है पैसे के लिए. तो लगता है मैं इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाता हूँ और सामने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है मार्केट में. वाई शुड आई डू वर्क? वाई शुड आई गो फॉर दिस हार्ड काइंड ऑफ वर्क? वाई शुड आई एग्जॉस्ट माई फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी? और फिर वहीं से उसका अपने प्रोडक्ट से डिटैचमेंट शुरू होता है. एंड देन कार्ल मार्क्स सेज, in capitalism, alienation is found at the four stages. The four stages होता है alienation. कार्ल मार्क्स कहता है हर एक वर्कर्स को कैपिटलिज्म में 4 स्टेजेस होता है एलियनेशन का. पहला कहता है कि when alienation from product, because his product is not his own product, alienation from product. Karl Marx says because when a person creates an object or a commodity, its involvement of his energy, his sentiment, his creativity, his imagination. But it is controlled by the Malik. So he has no control over his own product at all. So rather than attachment, he has detachment. उसको लगता है ये मेरा थोड़ी, ये मालिक का है. तो ये मालिक का प्रोडक्ट है, कमोडिटी है फॉर प्रॉफिट. देन व्हाई शुड आई गो फॉर अटैचमेंट? उससे नफरत करना शुरू करता है. तो एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट. और चूंकि ही is alienated from the product, later on worker is not only alienated from his own product but alienation from
also प्रोडक्शन प्रोसेस। वो पूरी उत्पादन की प्रक्रिया से नफरत करना शुरू करता है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी टायरिंग सम वर्क, मोनोटोनस वर्क, एग्जॉस्टिव वर्क। दिस लीड्स टू हाई डिवीजन ऑफ लेबर एंड देयरफॉर अपनी काम से नफरत, अपने प्रोडक्ट से नफरत करता है, अपने वर्क प्लेस से नफरत करता है। रोज काम पर जाने से पहले 10 बार सोचता है, रोता है कि मैं जाके क्या करूंगा, वहां तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं प्रोडक्शन का, मैं मनुष्य नहीं हूं। माई ह्यूमैनिटी इज लॉस्ट, आई एम डीह्यूमनाइज्ड एट द प्लेस ऑफ वर्क, सो व्हाई शुड आई गो देयर। वो मेरा जगह नहीं, वो मेरी दुनिया नहीं, वो एक ऐसी दुनिया है जहां मैं एक वस्तु हूं, एक वस्तु को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। सो नफरत करता है इससे। और थर्ड वो जो है द एलियनेशन फ्रॉम फेलो बीइंग, एलियनेशन फ्रॉम द फेलो बीइंग। Karl Marx say not only feel alienated from the product process of production but also from the fellow being। कहते हैं कि work is a very cooperative enterprise। जो काम है वह वर्क है, एक कलेक्टिव एक्शन होता है, कलेक्टिव एक्टिविटीज। ऑल पीपल वर्क टुगेदर, ऑल पीपल एंजॉय टुगेदर, देयर इज कॉपरेशन, देयर इज हार्मनी, देयर इज कलेक्टिव एफर्ट्स। तो काम करने में मजा आता है, मिलजुल के सब साथ काम कर रहे हो तो बहुत मजा आता है। बट इन कैपिटलिज्म देयर इज अ हाई डिवीजन ऑफ लेबर। सो बिकॉज ऑफ हाई डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाई वर्क स्पेशलाइजेशन, एवरीबडी इज अ given one sort of work, one part of work. So detachment, distance from the workers, number one, they're not allowed to meet, so they have to do their own part of work. So separation from there, number one. Number two, that even workers, sometimes workers are also like set against the other workers. कभी मजदूरों को आपस में लड़ाया जाता है, हर मजदूर एक दूसरे को आपस में कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। हर फील्ड में लोग अपने को सेम प्रोफेशन वाले लोग कॉम्पिटिटर समझते हैं। सो वो दे रादर देन फीलिंग द कॉमरेड्स, द फीलिंग्स ए सेंस ऑफ राइवलरी, कि मेरा ये कॉम्पिटिटर है, मेरा ये राइवलरी है। और कभी जानबूझ के कैपिटलिज्म इसको प्रमोट करता है, और इससे अपने ही लोगों से जिसे वो प्यार करता है वही लोग उसका दुश्मन होता है, उसी लोग से उसको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, और कॉम्पिटिशन में कभी हारता है कभी जीतता है, फिर अपने ही लोगों से नफरत होना शुरू होता है। और फाइनली जब सबसे नफरत हो जाए तो फाइनली द मैन हैज एलियनेशन, एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। कहते हैं इफ ए पर्सन इज एलियनेटेड फ्रॉम हिज प्रोडक्ट, जिस वस्तु को उत्पादन में अपना सब कुछ लगा देता है, यदि वो उससे नफरत करना शुरू कर दे, इफ ए पर्सन इज एलियनेटेड फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट, एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, alienated from the fellow beings, and finally is alienated from himself. So as per Karl Marx, alienation is the basic features of the capitalism. Somewhere the degree of alienation could be different. All professions cannot have equal level of alienation. In some professions, in some areas alienation is less, some areas it is more, where people have more control over their entire process of production, where they have flexibility, where they have group work, alienation will be less. But the people have no control to the production process, and a man is simply a helpless creature over there, only an instrument. Alienation level would be very high. So Marx talks about alienation, and these are the 4 process or 4 stages of alienation. Now the question is our question is that how alienation created in everyday life. Now question is how created in how created in everyday life. अब everyday life today, how created in everyday life today. आज everyday life में alienation क्या है? Karl Marx talked about alienation during the industrial society, but now people say that today if we have the post-industrial society, so alienation has been declined. Now we can say, is alienation also found today, or can we say do the workers observe alienation even in day-to-day life today? Answer is yes, as per Karl Marx. Degree of alienation would be more or less, but alienation is still found today.
Why this alienation found today? Many reasons are there. First of all, Karl Marx said that capitalism systematically generates alienation. Okay, why alienation? How creates a? Then it is, we can say, systematically transforms intrinsic human qualities, intrinsically transforms human qualities, human identities and human activities into a Karl Marx says alienation created in today's world because humans have their intrinsic qualities. They have intrinsic identities, qualities, and they have the activity. So humans' qualities, their identities, and their activities, all these are transformed into the transactional, sellable commodities in the market. No matter what quality I may have regarding teachings, sometimes I become the sellable good in the market. Where I'm paid higher, I'll go there. Where I'm not paid, I won't go there. So my own labor, my knowledge, my creativity all these become the sellable goods in the market. So I'm detached from my knowledge, detached from my study. It may be there. By the way, Karl Marx told teaching area alienation is very less because here there is flexibility, freedom, monotony is not there like that. So this one, so on the basis of that, we can find how the alienation is there. One, first we can say, first we have the super corporate work culture. So first we have the super corporate work culture, and this super corporate work culture means here it has the hyper specialization. Today we are living in the world of hyper specialization. So corporate world promotes the hyper specialization of work, and therefore this hyper specialization of work, now there is a huge competition. There is huge competition. And there is a people's life become quite mechanical. So huge competition, people's life become quite mechanical, and therefore this way they have alienation. So here we have no emotion. At the place of work in corporate world, people have no emotion. Relation is very formal. Informality is lost. Emotion is lost. Only the final result is more important. And what kind of people you are there, what problem you have at your workplace, that has no meaning. So people feel detached from the work. Second, consider today there is a rise of digital labor. Digital labor is there, no? Like many riders are there, many people are there, no? So digital labor means no control. Here people have no freedom, and here they have to follow some kind of algorithm. They have to follow some kind of algorithm or algorithmic management of the work, where people have to follow some kind of automated process. Second one. Third one, consider some kind of remote workers are there. Remote workers. So remote workers, again they are isolated from their fellow beings, number one. And therefore, isolation from the fellow being, so not connected, therefore they feel detached. And last but not least, that we can say, we have the rise of gig economy. Rise of gig economy. Rise of gig economy. So finally we can say, despite much more money given in the corporate world, in today's world, some better work condition could also be there, that people burn out at work.
long hours of work, mechanical process of work, formal relation at the place of work, and less importance to humanity, less importance to emotion, less importance to identity, more focus on the product rather than the people involved in the product. And finally, there is a commodity fetishism today, and this all process has led to the alienation. So alienation is the inherent quality of the capitalism. As per Marx, as long as capitalism exists, alienation would exist in the human life. So people, rather than feeling attachment to the work, will feel detached. Work being creative, but today work is not creative that way. So some people feel so much alienated, some people feel less alienated, some people may not feel, depending on situation. But alienation as a condition do exist in the capitalist world. So in everyday life, the nature of work in capitalism and the way humans are treated as instrument responsible for alienation. So if we want to de-alienate the people, we have to go for adopting many measures to eliminate the conditions of dehumanization and establish the condition of humanity at the place of work by freedom, by good work condition, by freedom, by dignity, by their recognition of their work. And in this way, if humanity is established, alienation can be avoided. Other people would work, but they would dislike their work. Thank you very much. Take care. Have a good day again.